This is our 5th NCERT book reading clip for the chapter 9 Biomolecule. Now in this clip we will read protein, polysaccharide, nucleic acid and the chemical bonds. So though the protein title we already read out in earlier 4th clip, but still let us revise it once again. So title 9.4 Proteins. Proteins are polypeptides. They are linear chain of amino acids linked by peptide bond as shown in 9.3 figure. Each protein is a polymer of amino acid, as there are 20 type of amino acids, say alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. This information about amino acid content is important, as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence, dietary protein are source of essential amino acid. Therefore, amino acids can be of two types, essential and non-essential. Non-essential amino acid are those which our body can synthesize, while we get the essential amino acid through our food. Proteins carry out many functions in living organism. Some transport nutrients across the cell membrane. Some fight the infectious organisms, that is antibodies. Some act as a hormone, for example insulin. Some are enzyme, for example trypsin. Etc. The table 9.5 gives the functions of various proteins. So in that table we have already seen that collagen protein is intercellular ground substance. Trypsin protein is a digestive enzyme. Insulin protein act as a hormone. Antibodies as a protein fight against infectious agent. Receptor protein sensory reception, smell, taste and hormone receptor. And GLUT4, as I told previously, neat question, enable glucose transport into the cell. Then very important last 2 points we already covered. They were collagen is a most abundant protein. Collagen is most abundant protein in animal world. And ribulose biphosphate carboxylase oxygenase Rubisco is most abundant protein in plant world as well as in whole biosphere. इथपर्यंत आपण चौथ्या क्लिपमध्ये पाहिलं होतं. आता आपण पॉलिसॅकराइड्स,
आणि न्यूक्लिक ॲसिड सुरू करतो आहे. सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. 9.5 polysaccharides means carbohydrates. Acid insoluble pellet also has polysaccharides, that is carbohydrate, as another class of macromolecule. तो हमने देखा 3 प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिले थे. वो थे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड. उस एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में लिपिड्स भी मिले थे, बट वो इसलिए नहीं कि वो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो इसलिए कि वो सेपरेट न हो सके, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ड्यूरिंग क्रशिंग दे फॉर्म वेसिकल्स. तो हमने ऑलरेडी प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल देख लिया 9.4. अब 9.5 में हम देख रहे पॉलीसेकेराइड. सो एसिड इनसोल्यूबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स. तो जैसे प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, वैसे पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स. दे आर थ्रेड्स containing different monosaccharides as a building block. तो जैसे प्रोटीन is a long chain of amino acids connected by peptide bond. तो वहां पे जो रिपीटिंग यूनिट्स थे वो अमीनो एसिड थे. वैसे ही पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर एंड लिटरली दे आर लाइक अ थ्रेड विच कंटेन monosaccharides as a building block. For example, cellulose is polymeric polysaccharide, that is a long chain wala polysaccharide. It's a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. आणि आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा एकच मोनोमर n नंबर ऑफ टाइम रिपीट होतो त्याला आपण म्हणतो होमोपॉलिमर. तो सेल्युलोज हा होमोपॉलिमर आहे. तो फॉर एक्झाम्पल सेल्युलोज इज अ पॉलिमेरिक पॉलिसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ अ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ग्लुकोज. हेन्स सेल्युलोज इज अ होमोपॉलिमर. नाउ स्टार्च. Starch is a variant, a little different form of this, but present as a storehouse of energy in plant tissue. तो जो प्लांट टिश्यूज है या प्लांट्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी माने ग्लूकोज को स्टोर करते इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च सेलुलोज का ही एक वेरिएंट है. Animals have another variant called glycogen. So, starch is a stored product of glucose in plant and in animal it is glycogen. Insulin is a long chain of fructose. अब ध्यान रहे कि इंसुलिन में एक लॉन्ग चेन ऑफ फ्रुक्टोज. आई एम रियली सॉरी, नॉट इंसुलिन. Inulin is a polymer of fructose. तो ग्लूकोज का पॉलीमर कौन है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन. और फ्रक्टोज का पॉलीमर है इनुलिन. इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजेन. इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजेन. The right end is called reducing end. So right end means the last end, and left end, that is a beginning, is called non-reducing end.
So in a polysaccharide, for example glycogen, the left end, that is beginning, is non-reducing, and the right end, that is the end, is reducing end. It has branches, so glycogen को branches है. It has branches as shown in form of a cartoon in 9.2. अब ध्यान दो, starch forms helical secondary structure. So जैसे हमने प्रोटीन में देखा, a long chain is primary structure. कुछ जगह पे वो अगर रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जैसी हो गई तो दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर. तो स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर. In fact, the starch can hold iodine molecule in helical protein. helical portion. तो starch ला सेकंडरी स्ट्रक्चर असतं जे हेलिकली कॉईल असतं. ते हेलायसिस होल्ड करतात आयोडीन. The starch iodine complex is blue in color, like our highlighter. Now very important, cellulose does not contain complex helices. So starch has a complex helices. It hold iodine, became blue with iodine. But cellulose does not have complex helices, hence cannot hold iodine. Now a cartoon is shown. So this is a diagrammatic representation of portion of glycogen. Now see, it is branched. So these are the branches. So the right end will be reducing and left end will be non-reducing, and it's a long chain of glucose. So in plant, the cell walls are made up of cellulose. The paper made from plant pulp and cotton fiber is also cellulosic. तो राइटिंग पेपर जो आहे तोही सेल्युलोज आहे. प्लांट सेल वॉलही सेल्युलोजिक आहे, आणि आपण जे कॉटनचे वस्त्र घालतो तेही सेल्युलोज आहे. सेल्युलोज इज अ लॉंग पॉलिमर ऑफ ग्लुकोज. इट्स अ homopolymer. The monosaccharide unit is glucose there. There are more complex polysaccharides in nature. They have as a building block amino sugar and chemically modified sugar. So the more complex polysaccharides are found in nature. They have a building blocks like amino sugar, and chemically they are modified sugar. Example, glucose amine, N-acetyl galactose amine, etc. Now the neat question. Exoskeleton of insects, for example, have a complex polysaccharide called chitin. So N-acetyl galactose amine या ग्लुकोज अमाइन हे कॉम्प्लेक्स किंवा कॉन्जुगेटेड झालेले आहे अमीनो ग्रुप सोबत. तो इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन, तो वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है. तो क्वेश्चन पूछा था what is the chemical nature of chitin? So it is a complex polysaccharide. These complex polysaccharides are mostly homopolymers, not like protein. Proteins are heteropolymer. So
hurriedly revives the polysaccharides. Nine point five polysaccharide. Acid insoluble pellet also has polysaccharides, that is carbohydrate, as another class of biomacromolecule. Polysaccharides are long chain of sugars. They are long chains of sugars. They are threads containing different monosaccharide. So they are threads containing different monosaccharide as a building block. तो डिफरेंट मोनोसेकेराइड के धागे कैसे? जैसे इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, बट सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लुकोज. तसं they are threads containing different monosaccharide as a building block. For example, cellulose is polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, glucose, and hence cellulose is a homopolymer. Starch and glycogen are two another variants of cellulose, where starch as a variant present as a storehouse of energy in plant tissue, and animals have another variant called glycogen. So inulin is a polymer of fructose. In polysaccharide chain, say glycogen, the right end is reducing type and left end is non-reducing it. Glycogen has branches as shown in a form of a cartoon in 9.2. The starch, which is a variant of cellulose in plant, forms a helical secondary structure. In fact, starch can hold iodine molecule in helices, and hence starch iodine complex is blue in color. However, cellulose does not contain such helices and hence cannot hold iodine. Plant cell walls are made up of cellulose, that you know. Paper made from plant pulp and cotton fiber are also cellulosic. There are more complex polysaccharides in nature. They have a building block, amino sugars, and chemically they are modified sugars, glucosamine, N-acetyl galactosamine, etc. So these are modified sugars. Exoskeleton of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin. तो तुम्हाला मी लक्षात ठेवायला सांगितलं की कायटीन कोण आहे? कॉम्प्लेक्स पॉलिसॅकराइड आहे. तो these complex polysaccharides are mostly homopolymers. Now the last macromolecule. So एक आपण प्रोटीन पाहिलं, दोन आपण पॉलिसॅकराइड पाहिलं, आता तीन न्यूक्लिक ॲसिड. So you know everything about nucleic acid. तो जैसे मैं यहाँ ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता. तो न्यूक्लिक एसिड were discovered in 1869 by Frederick Mischer. Nucleic acid on the basis of sugar are of two types.
If the sugar of nucleic acid is C5H10O4, that is deoxyribose sugar, तो that nucleic acid containing deoxyribose sugar is DNA, and one who has C5H10O5, that is ribose. So the ribose containing nucleic acid are RNA. तो ठीक आहे सर, 1869 मध्ये फ्रेडरिक मिशरनी न्यूक्लिक ॲसिड डिस्कवर केले होते. DNA आणि RNA दोन प्रकारचे न्यूक्लिक ॲसिड असतात ऑन द बेसिस ऑफ टाईप ऑफ शुगर. न्यूक्लिक ॲसिड कसे असतात? सो इट इज अगेन अ पॉलिमर, अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड, जैसे सेलुलोज में ग्लूकोज, जैसे इन्युलिन में फ्रुक्टोज, तो तसं न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये रिपीटिंग युनिट कोण असतात? न्यूक्लियोटाइड्स. मग आता हा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, हा सेकंड न्यूक्लियोटाइड, हा थर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन. तो कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, आप तो सभी जानते कि कोणताही न्यूक्लियोटाइड असो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट. तो शुगर डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती, राइबोज भी हो सकती. नाइट्रोजन बेस AGCUT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन. और फॉस्फेट H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. तो अब देखो कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जुड़ते कैसे हैं. तो फर्ज करो कि दिस इज अ 1-डीऑक्सीराइबोज शुगर. पहिल्याला नायट्रोजन बेस ॲडेनिन आहे, 5व्या कार्बनला इथे फॉस्फेट आहे. आता हा दुसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर, पहिल्याला समजा थायमिन आहे, नायट्रोजन बेस शुगरच्या पहिल्या कार्बनला, आणि 5व्या कार्बनला आहे फॉस्फेट. तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, तो ये जो तीसरा कार्बन है शुगर का, उसको रहता HOH, और जो निचला न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट को रहता OH. तो द फॉस्फेट which is attached to 5th carbon of one nucleotide, phosphate which is attached to 5th carbon of one nucleotide will join the 3rd carbon of neighboring nucleotide. अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिलीट हो जाएगा, और ये वाटर डिलीट होने से ये बनेगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. तो ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड जुळेंगे. टू बी सिम्प्लिफाईड, आता यालाच आपण जर सिम्प्लिफाय केलं तर समजा शुगर 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 शुगर, हर एक के पहले को रहती नाइट्रोजन बेस, समझा ATGC. हर एक के 5वें को रहता फॉस्फेट ग्रुप. तो जो फॉस्फेट 5वें कार्बन को अटैच है एक न्यूक्लियोटाइड में, वो पड़ोसी के तीसरे को अटैच होगा लाइक दिस, और बनेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. तो ऐसी एक चेन बनती. तो हम लोग जो कहते कि ये है एक चेन से 3' to 5' अपवर्ड, और ये दूसरी चेन
नाउ दिस इज 3' to 5' डाउनवर्ड। तो ये जो चेन है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स की बनी है और नाइट्रोजन बेसेस अंदर की तरफ रहते, वो तो हमने डीएनए मॉडल में सीख लिया। अब देखो यहां पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या दिया है। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल that one would find in acid insoluble fraction of any living tissue is nucleic acid. जसं आधी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, अब न्यूक्लिक एसिड. These are polynucleotides, that is a long chain of nucleotides. Together with polysaccharide and polypeptide, these comprise the true macromolecular fraction of any living cell or tissue. तो पॉलीसॅकराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स म्हणजे प्रोटीन आणि पॉलीन्यूक्लिओटाइड्स म्हणजे न्यूक्लिक ॲसिड. सो हे असतात ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, मतलब जो एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेंगे. फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड. अ न्यूक्लियोटाइड has three chemically distinct components. One is heterocyclic compound, that is nitrogen base, either A, G, C, T और RNA है तो U. So one is a heterocyclic compound. Second is a monosaccharide, that is sugar, पेंटोज शुगर. सो आरएनए में राइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज. एंड थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट. सो तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट. तो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट टुगेदर फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड. As you notice in figure 9.1, जो हमने देख ली है फिगर जिसमें नाइट्रोजन बेसेस दिखाई थी. The heterocyclic compounds in a nucleic acid are nitrogen bases named adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. Adenine and guanine are substituted purine, while rest are substituted pyrimidine. तो adenine and guanine are purine, cytosine, thymine, uracil are pyrimidine. So adenine, guanine are substituted purine while rest are substituted pyrimidine. The skeletal heterocyclic ring is called purine and pyrimidine respectively. Sugar found in polynucleotide is either ribose, a monosaccharide, pentose म्हणजे 5 कार्बन वाली शुगर, और द शुगर में भी 2 डीऑक्सीराइबोज. तो दोनों में अंतर मैंने बताया. C5H10O4, C5H10O5. तो this is deoxyribose, this is ribose. A nucleic acid containing deoxyribose sugar is called DNA, that is deoxyribonucleic acid, while that of which contain ribose is called RNA, that is ribonucleic acid. आता याच्यानंतर जे टायटल आहे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तर हे आपण प्रोटीन सोबतच घेतलं होतं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. अब हमें एक इम्पॉर्टंट टाइटल देखना है जिस पे नीट क्वेश्चन रहते. आता मी तुम्हाला प्रत्येक वेळा सांगतो, हा चॅप्टर इन्फॉर्मेशन बेस आहे. हा टोटल केमिस्ट्रीशी रिलेटेड टॉपिक आहे. इथे वारंवार सारखेच क्वेश्चन विचारतात. तो नुसतं तुम्ही ज्या माझ्या अंडरलाईन आहे
त्या जर 1-2 पेजेस लिहून घेतले आणि त्या वाचले तर तुम्हाला या चॅप्टरचे 3 किंवा 4 क्वेश्चन मिळतात. जेव्हा आपण हा चॅप्टर होईल ना तेव्हा तुम्हाला मी सांगेल की तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 2010 ते 2020 बघून घ्या. तर तुम्हाला असं दिसेल की केअरफुली जर आपण ऐकली ही क्लिप आणि पाहिली तर मग काही कठीण नाही. अदरवाईज याला जर मी शिकवायला गेलो तर मग 12-15 व्हिडिओज होतात आणि ते सगळं नॉलेज इथं मिळत आहे. तर तुम्ही फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा. विशेषतः जे करणारे आणि मेहनती पोरं आहे त्यांना मी कडकडीनं म्हणेल की तुमच्याकडनंच अपेक्षा असते, तुम्ही लोक करतात. जसं मला एक रिस्पॉन्स बायोटेक्नॉलॉजी चॅप्टर 11 आणि 12 बंपर रिस्पॉन्स आला. तो सेम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल. नाउ हमारा 9.8 टाइटल आ गया, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलिमर्स. तो सर जसं प्रोटीनचे मोनोमर असतात अमिनो ॲसिड्स, तो त्यांना जो बॉन्ड लिंक करतो तो असतो पेप्टाइड बॉन्ड. तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलिमर. किंवा जसं DNA RNA मध्ये ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड और इनको जोड़ने वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. जैसे न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर के पहले को जब नाइट्रोजन बेस अटैच होती है तो दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. शुगर के 5वें को फॉस्फेट अटैच होता है तो दैट इज अ शुगर फॉस्फेट और ईस्टर बॉन्ड. तो असे आपल्याला बॉन्ड्स पाहिजे जे मोनोमर्सला कनेक्ट करतील टू फॉर्म अ पॉलिमर. देखो अब, सो in a polypeptide or protein, amino acids are linked by peptide bond which is formed when carboxyl group of one amino acid react with amino group of next amino acid with elimination of water moiety. The process is called dehydration. मग आता आपण तयार करू. समजा एक अमिनो ॲसिड आहे कार्बन, हा कार्बॉक्सिल ग्रुप, हा हायड्रोजन आणि हा NH2 ग्रुप आणि हा R ग्रुप. आता दुसरा अमिनो ॲसिड, वापस कार्बन, त्याला इकडून NH2 ग्रुप, इकडून COOH कार्बॉक्सिल ग्रुप, खाली हायड्रोजन आणि वरती फंक्शनल ग्रुप. तो आता पहा, कार्बॉक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विथ NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड और इसमें से अब डिलीट होगा वॉटर मोइटी. म्हणजे इकडचा एक H, इकडचा एक H झाले H2 आणि हा O, हा डिलीट होईल म्हणजे झालं डिहायड्रेशन आणि तयार झाला यांच्यामध्ये पेप्टाइड बॉन्ड. तो अब आपको ये क्लियर है कि इन प्रोटीन दैट इज पॉलीपेप्टाइड द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड which is formed when carboxyl group of one amino acid react with the amino group of next amino acid with elimination of water moiety. The process is dehydration. In polysaccharide, तो अभी हमने जो बात की वो प्रोटीन की तिकडे पेप्टाइड बॉन्ड असतात. आता इन पॉलीसॅकराइड, इन पॉलीसॅकराइड म्हणजे कार्बोहायड्रेट, इंडिविजुअल मोनोसॅकराइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये जो होंगे मोनोसैकेराइड शुगर्स, ये आपस में जुड़ते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड.
So in a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by glycosidic bond. This bond is formed by, again, dehydration. This bond is formed between two carbon atom of two adjacent monosaccharide. So two carbon atom of two adjacent monosaccharides. तो इथं सुद्धा होते डिहाइड्रेशन. तो हमने कौन कौन से बॉन्ड देखे? सरपेप्टाइड बॉन्ड, ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. आता आपण फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाहू. इन न्यूक्लिक एसिड, जो थर्ड पॉलीमर, तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहां पर 3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो पॉलीमर्स है, 3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल दैट इज इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विच आर ट्रू पॉलीमर्स, उसमें मोनोमर्स कौन से बॉन्ड जोड़ते हैं वो बताया कि इन केस ऑफ प्रोटीन, इन केस ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड नाउ इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अब न्यूक्लिक एसिड में आएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो देखो, इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर. फॉस्फेट मोइटी लिंक्स थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड. मग बघा बरं पटकन आता. तो ही एक शुगर आहे. तो ये जो शुगर है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और यहां 5वां कार्बन है जिसको फॉस्फेट है. आता खाली पण एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, उसको फॉस्फेट है. तो फॉस्फेट मोइटी लिंक थर्ड कार्बन. तो पहा, लक्ष द्या, फॉस्फेट मोइटी लिंक द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर of one nucleotide, third carbon of one sugar of one nucleotide. So phosphate moiety link third carbon of one sugar of one nucleotide to fifth carbon of the sugar of succeeding nucleotide. तो हा फिफ्थ कार्बन आहे, तर त्याला इथे होते कनेक्शन. मग हे कनेक्शन झालं कसं, मग ते आपण पाहू एकदा. तो देखो, ये जो शुगर है, पहले को नाइट्रोजन बेस, 5वें को फॉस्फेट. तो फॉस्फेट कसा असतो? P डबल बॉन्ड O, इथं एक OH, इथं एक OH, इथे एक OH असतो. अब ये ऊपर की डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसको नीचे रहता OH. तो फॉस्फेट जो एक न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन को है, वो पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड के शुगर के तीसरे कार्बन को कैसे अटैच होगा? तो ये यहां से डिलीट होगा वाटर मॉलिक्यूल. नाउ इन अ न्यूक्लिक एसिड द फॉस्फेट links third carbon of one sugar of one nucleotide to fifth carbon of sugar of another nucleotide. The bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is a ester bond. As there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. तो फॉस्फेट आणि हायड्रॉक्सिल ग्रुप याच्यातला जो बॉन्ड आहे तो आहे
ईस्टर बॉन्ड आता मी करून दाखवतो तुम्हाला. तो देखो, पहले हम लोग एक डीऑक्सीराइबोज शुगर देखते. कार्बन 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट कार्बनला असतो HOH, सेकंडला असतो HH, थर्डला HOH, हा फोर्थला H आणि इथं CH2OH असतो. अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐसा है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH. आता पहा, OH of a fifth carbon and H of a phosphate. सो ये डिलीट हो गए. अब ये फॉस्फेट ने ये 5वें कार्बन के साथ बनाया ईस्टर बॉन्ड. अब दूसरा ईस्टर बॉन्ड इधर बनेगा. आता ही दूसरी शुगर आहे. कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 आणि इथं CH2OH असतो, त्याला फॉस्फेट जुड़तो. तो ये तीसरे कार्बन को यहां रहेगा, जैसे यहां है HOH तसं HOH. आता पहा, ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अब ऐसा ही इधर बनेगा ईस्टर बॉन्ड. तो यहां का OH और यहां का H डिलीट हो जाएगा. और ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड. तो पहा, हा आहे फॉस्फेट, तो PO आणि हा CH2, PO आणि इथं CH. तो हे दोन साइडला ईस्टर आहे. दिस इज कॉल्ड फॉस्फो डाय ईस्टर बॉन्ड. So nature of bond linking monomers in a polymer. In a polypeptide or protein, amino acids are linked by peptide bond, which is formed when carboxyl COOH group of one amino acid react with amino group NH2 group of next amino acid with elimination of water moiety. The process is called dehydration. In polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by glycosidic bond. This bond is also formed by dehydration. This bond is formed between two carbon atom of two adjacent monosaccharide. In case of nucleic acid, a phosphate link third carbon of one sugar and fifth carbon of another sugar of two adjacent nucleoside. The bond between phosphate and OH group of one sugar is a ester bond, and as there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. फिगर 9.5. अब देखो यहां पर नीट क्वेश्चन कैसे पूछा उन्होंने. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ऑप्शन है कि प्रोटीन. द ऑप्शंस आर लाइक कि क्या प्रोटीन में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. नहीं सर, वहां पेप्टाइड बॉन्ड है. पॉलीसेकेराइड में है. नहीं, वहां ग्लाइकोसिडिक है. तो न्यूक्लिक एसिड में है. हां सर, वहां फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. तो असा एक क्वेश्चन इथे विचारला होता. तो the bond between the phosphate and hydroxyl group of the sugar is ester bond. As there is a one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. फिगर 9.5. अब थोड़ा आगे चलते. न्यूक्लिक एसिड exhibit
वाइड वैरायटी ऑफ सेकंडरी स्ट्रक्चर्स. तो सर सेकंडरी स्ट्रक्चर्स म्हणजे हेलिकल स्ट्रक्चर. तो न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए यानी आरएनए दर्शाते हैं वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, one of the secondary structure shown by DNA is a famous Watson-Crick model. This model says that DNA exists as a double helix. The two strands of polynucleotides are anti-parallel, that is run in opposite direction. The backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. आता हे महत्वाचं आहे. बॅकबोन म्हणजे रॅलिंग ऑफ द ट्विस्टेड लॅडर. इट इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर. बघा आता मी इथे काढतो. शुगर 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 हर एक के पांचवे को फॉस्फेट रहता. म्हणजे प्रत्येक शुगरच्या पाचव्या कार्बनला काय चिपकतो? फॉस्फेट चिपकतो. आता दुसरी स्ट्रँड वापस शुगर्स आणि ती अँटी पॅरलल आहे, तर त्याचा पाचवा खाली येईल, तर त्यालाही आहे फॉस्फेट. तो आता बघा फॉस्फो डाय ईस्टर बॉन्ड तयार झाले. लाइक दिस. अब इसको OH फ्री है तो ये 3' एंड है. यहाँ फॉस्फेट फ्री है 5' एंड है. OH फ्री है 3' एंड है. फॉस्फेट फ्री है 5' एंड है. तो फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर हा बॅकबोन आहे दोघांचा. और ये नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे है ऑन इनर साइड परपेंडिक्युलर. तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. तो ही झाली रॅलिंग म्हणजे बॅकबोन आणि ह्या झाल्या स्टेप्स. So the backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside. Adenine and guanine of one strand compulsorily pair with thymine and cytosine respectively on another strand. मतलब वो भी एक बार देख लो. सो ही एक स्ट्रँड आहे 3' to 5' आणि ही दुसरी आहे 3' to 5' डाउनवर्ड. सो एक तरफ A तो दूसरी तरफ T, एक तरफ T तो दूसरी तरफ A, एक तरफ G तो दूसरी तरफ C, एक तरफ C तो दूसरी तरफ G. सो बिटवीन A and T डबल बॉन्ड, T and A double bond, G and C triple bond, C and G triple bond. So nucleic acids show wide variety of secondary structure. For example, one of the secondary structure exhibited by DNA is famous Watson-Crick model. This model says that DNA exists as a double helix. The two strands of polynucleotide are anti-parallel, that is run in opposite direction. The backbone is formed by, आता हे लक्षात ठेवा, formed by sugar phosphate sugar chain आणि nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone म्हणजे inner side ला असतात. म्हणजे ही जी शिडी आहे ते शुगर फॉस्फेट आहे आणि हे जे आतमध्ये आहेत पायऱ्या त्या नाइट्रोजन बेसिस है. ही रैलिंग जिसको हम पकड़ते और ये स्टेप्स माने बेस पेयर्स रहती. सो एडेनिन एंड ग्वानिन, सो से एडेनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरीली बेस पेयर विथ थाइमिन एंड साइटोसिन ऑन अनदर स्ट्रैंड. अब हमें ये पिक्चर्स देखने हैं. सो 9.5 डायग्राम इंडिकेटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो देखो एक स्ट्रैंड
5 डैश टू 3 डैश डाउनवर्ड, दूसरी 5 डैश टू 3 डैश अपवर्ड। अब यहां जो एक पोर्शन लिया वहां पे कौन है? तो देखो, दिस इज शुगर. तुम्ही या डायग्रामवरती लक्ष द्या. सो ऑक्सिजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5. कार्बन 1, कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब देखो, पहले को अटैच है थाइमिन, तो शुगर के हमेशा पहले कार्बन को अटैच रहती नाइट्रोजन बेस. यहां भी देखो, पहले कार्बन को अटैच है नाइट्रोजन बेस, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. आता फॉस्फेट अटॅच करायचा, तो ये देखो पी फॉस्फेट और यहां CH2OH था, CH2OH होता. आता कोण राहिला? CH2 राहिला आणि हा OH आणि याचा H हा डिलीट झाला वॉटर, तो ये ईस्टर बॉन्ड. और यहाँ पे OH था और इसको भी OH था हा इथे, तो हा OH आणि हा H, तो हा एक ईस्टर बॉन्ड. सो दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सेम इज हियर, शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजन बेस इकडे फॉस्फेट, तो हा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आहे. आता पेअरिंग पहा, TA डबल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दिस. तो अब वो सारी चीजें जो हमने डीएनए मॉडल में पढ़ी थी वो, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A and T and 3 bonds between G and C. Each strand appear like a helical staircase. Each step of ascent. So जैसे कि ये कोई सीढ़ी है ऐसे, तो each step of ascent, this one, तो each step of ascent is a base pair. So each step of ascent is represented by base pair. At each step of ascent, the strand turns 36 डिग्री. तो ऐसे सीधे ऊपर नहीं, तो 36 डिग्री से वो ट्विस्ट है. One full turn of helical strand would involve 10 steps. That is 10 base pair. So अब आपको ये मैं निकाल के दर्शाता. 1 टर्न, तो फर्ज करो so this is a minor groove, this is a minor groove, and this distance is 1 turn, or this is a major groove and this is a major groove, this is also a 1 turn. So in 1 turn the base pairs would be 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this. तो one full turn of helical strand would involve 10 step or 10 base pair. Attempt drawing a line diagram. The pitch would be 34 angstrom. So pitch माने 1 turn. The rise per base pair is 3.4 angstrom. This form of DNA with above mentioned saline feature is bDNA. In higher classes you would be told that there are more than dozen form of DNA
नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट विथ युनिक स्ट्रक्चरल फीचर. म्हणजे कसं बघा आता, तो हा आपण ॲक्च्युअल हेलिक्स काढू. तो देखो यहां से यहां तक दिस इज वन टर्न. इट कंटेन 10 बेस पेयर्स माने 10 स्टेप्स. इसकी टोटल लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉन्ग. और अगर इसमें 10 बेस पेयर है तो डिवाइडेड बाय 34 डिवाइडेड बाय 10, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव बेस पेयर लाइक दिस. सो इन दोनों का डिस्टेंस 3.4, वापस 3.4 लाइक दिस, ऐसे 10 टाइम्स. सो 3.4 इंटू 10 इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग. और ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो बी डीएनए का है. ऐसा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए है. सारे डीएनए रहते राइट हैंडेड हेलाइसिस, सिर्फ जेड रहता लेफ्ट हँडेड हेलिक्स. तो आत्ता आपलं प्रोटीन झालं, पॉलिसेकराइड झालं आणि न्यूक्लिक ॲसिड झालं. तीनों मॅक्रोमॉलिक्यूल या तीनों पॉलिमर हो गए. आत्ता एक खूप इन्फॉर्मेशन बेस्ड टायटल आहे, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, अ कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज एनाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल पाथवे क्या रहता, उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें आएगी. व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी. सो दॅट इज अ लिव्हिंग स्टेट, एक टायटल येणार आहे नंतर. आणि सगळ्यात आता याच्या पुढं महत्त्वाचं हे टाइटल आहे एंजाइम. और हर साल एंजाइम पे एक क्वेश्चन पक्का है. इतना ही नहीं, बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेस में एंजाइम के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता. तो जे होशियार विद्यार्थी है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उनको मैं कहूँगा आप खुद एक बार एंजाइम पढ़ लो. इट विल टेक 30 मिनट्स फॉर यू टू रीड थ्रू एंजाइम्स और आपको समझ में आएगा. द थिंग्स आर व्हेरी इजी. शेवटी एंजाइम काय असतात? प्रोटीन, एक्सेप्ट राइबोजाइम. तो अब अगली क्लिप में मैं पहले एंजाइम्स बताऊंगा और फिर इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम, डायनामिक स्टेट, वो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन बेस है उसको कोई महत्व नहीं है, तो उसकी हमारी बात होगी. थैंक यू.